आप बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। जी सर। जिसके वजीर थे एतजाज हसन साहब खुद। शायद उस जमाने में वो नहीं थे। शायद वह तो ना करें ना, आप पिटिशनर बिफोर अस, आपको पता होना चाहिए बातें ना। आपने कहा आई एम अ फेडरल मिनिस्टर, so he is in the People's Party, isn't he not? जी, still he is in People's Party. So ये अपनी हुकूमत की नोटिफिकेशन को मुस्तरद करना चाहते हैं। अगर गलत थी तो मैं लॉर्ड भाई हम आपसे पूछ रहे हैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अब आप बता दें हम करें क्या इसके अलावा। ये आप कहते हैं ये इसी की, तो कम से कम ये तो नोटिफिकेशन अच्छी बात है कि कमीशन इंक्वायरी तश्कील दी गई, आप चाहते हैं इसको मुस्तरद कर दें। नहीं सर, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये 13 साल काम किया है इन्होंने, और जो मैं रिपोर्ट जो आपको सामने में पढ़ रहा था मैं वो पढ़ दूं, फिर सर मैं गुजारिशात पेश करता हूँ। नहीं, इसमें आप ये चाहते हैं कि डायरेक्ट दी फॉर्मेशन ऑफ कमीशन मेंशन इन पैराग्राफ 5 ऑफ द ग्राउंड, वो बताइए ना। वो आप कितने सारे पैराग्राफ कौन सा है जिसमें जो आप कमीशन बनाना चाहते हैं? जी सर। सर ये प्रेयर के अंदर जो है ना, इनका क्लॉज 4 है, रोमन, डायरेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ कमीशन मेंशन इन द पैराग्राफ F ऑफ द ग्राउंड। सो कौन सा कमीशन भाई? ये कमीशन ऑलरेडी है, यू वांट टू रिप्लेस द कमीशन। बताइए कौन सा किस पेज पे? वो बहुत सारे F हैं और वेरी डिफिकल्ट टू रीड। किसमें लिखा आपने? ये कौन सा फिर कमीशन बना है वो बताए। पेज 30 पे है। आप चाहते हैं सर वो प्रपोज कमीशन का मैंने दिया है। ऑनरेबल जज ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जी सर। प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार, माय लॉर्ड। ये तो लिखा है ये पेज 20। जी F माय लॉर्ड, इसमें पैरा J से मैं अगर रेलिवेंट पढ़ना चाहूंगा मैंने। To comply with the legal and international standards, the Commission must have, number 1, independent members, number 2, a limited tenure for members, number 3, a process for removal of members on the grounds of misconduct or inability to carry out duties, and 4, a definition of enforced disappearance which is compatible with Article 2 of the International Convention for the Protection of all persons from enforced disappearance. These persons who have luckily returned, and at least optically none the worse for wear, like Sheikh Rashid, Farooq Habib, Sadaqat Ali Abbasi, Usman Dar, Azam Khan and others, would ideally be the best source of information about their captors, but the petitioner understands that they or their dear ones may be put to immediate jeopardy. They may therefore be saying that these people are... They were abducted, kidnapped, after some time. Sir, I'm sorry. Are they petitioners before us? No, my lord. It is public interest litigation before you. No, देखिए ना, you are specifying certain individuals. Either you should say these individuals are very poor, people without any resources who cannot approach the courts. ठीक है? Or you have certain other priorities, I don't know. How can we compel a person who can file a review petition in the Dharna case and not file other cases and file every other case? How can you plead on behalf of another person unless that person is a underprivileged person? That's a different thing. But if you are saying is Mr. Sheikh Rashid one of the underprivileged persons who does not have a voice, who does not have access to the media, who cannot engage a counsel, who cannot approach the court, is he one of those persons? No, my lord. Yes, you are coming 184(3. My lord. Yes, my lord. देखिए, we take second. दूसरी बात, Mr. Sheikh Rashid, मैं tomorrow say, I have no grievance. Who is Mr. Shoaib Shaheen to take my name in court? Have you made him a party? No, my lord. How can you take him? There are certain basic principles of drafting. Right. If you're going to plead someone else's case, either you array him as a petitioner or array him as a respondent. Right. You cannot just use a person's name. And are all these persons aligned to certain political party, then it becomes a political matter that you're bringing to the court. Either you come with a genuine request of missing persons. If you want to make it politicized, this is not the forum for that. And these are persons who wax eloquent on television every day. So please, they are not underprivileged
people who cannot. Has Mr. Sheikh Rashid ever been a minister? जी सर, राइट। How many times? और खाली 7-8 मरतबा आई थिंक। So ये मासूम लोगों में इनको आप कैटेगराइज करेंगे? आप जरा सोचिए ना, देखिए ना, अगर if you're genuinely interested, then please tell us. We will certainly assist. It's very wrong. But if Mr. Sheikh Rashid cannot come to the Supreme Court, then I don't think anybody can come to the Supreme Court. After all, Itizaz Ahsan has come to the Supreme Court. So can he come to the Supreme Court himself? You cannot plead someone else's case. But I have not only the No, you are, names. who's Mr. Farooq Habib then? The next name. He was a political activist. He belonged at that time to the PTI, but thereafter he left. And he was placed before the TV house. Before that, his cases before the house? Some TV station that I was kept somewhere. I went somewhere, and thereafter, पीछे family ने सारे मुकदमात कर रखे थे कि he was arrested, he is kidnapped, he don't know the whereabouts, and thereafter he reappeared on the TV show that he said that I was missing on my own motion. मतलब मैं जो गुजारिश करता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ, one by one चलते हैं. So then he's also political activist. Chale. Who's Mr. Sadaqat Ali Abbasi? He was also a political activist. In which belonged party? to the PTI. They then have now changed. ये इनमें से कोई कोर्ट खुद कोई नहीं आया है सर। कोर्ट में इनकी अब चेंज क्या मतलब, किस पार्टी में अब? लेफ्ट दी पीटीआई, आई थिंक शायद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या किसी और पार्टी में, या बट टीवी हाउस में पेश किया गया। आपकी ये रंजिश है कि ये आपकी पार्टी छोड़ गए? नो माय लॉर्ड, हम ये कहते हैं। नहीं, एक सेकंड ठहरिए ना, तो आप इनके लिए प्लीड कैसे कर रहे हैं? अच्छा, अगला नाम पढ़िए, ये कौन है? उस्मान डार साहब। उस्मान डार भी, माय लॉर्ड, ही वाज आल्सो अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बिलोंगिंग टू पीटीआई। हां, पीटीआई देन क्या आप किस पार्टी में? एट दैट टाइम नो लेफ्ट पीटीआई बट नॉट जॉइन। हम क्या उनको कहेंगे वापस पीटीआई में शामिल हो जाओ? नो रीजन माय लॉर्ड, हम ये नहीं कहते। हमारी जो गुजारिश है, सीनियर काउंसिल सर मैं अर्ज करूंगा ना सर। अच्छा, अगला नाम कर लें। आजम खान कौन है? आजम खान, ही वाज ए ब्यूरोक्रेट, ही वाज एबडक्टेड। Was bureaucrat का क्या मतलब? He was PSPM, Principal Secretary to Prime Minister. What grade? 22 grade. Do you go higher than 22? Sir, Can you go higher than grade 22? No sir, that is the last. He can't plead his own case. सर वजह थी, मैं उसी पे आता हूँ। आप प्लीज देखिए ना, अगर आप इसको पॉलिटिकल लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हम आपको इजाजत नहीं देंगे। नहीं सर, अगर नहीं, आप बिल्कुल अभी तक जो आपने बातें की हैं सारी आपने एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी की बातें की हैं, ठीक है? अब सर इसमें जो है ना सर, मैंने तमाम लोगों को ब्यूरोक्रेट्स, माय लॉर्ड पॉइंट्स आउट कि आपने और भी नाम लिखे हैं। ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम, ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम है, मिसिंग पर्संस, बलोच फैमिली। मोहम्मद खान भट्टी जी, ये कौन है? ये पंजाब का ब्यूरोक्रेट था सर। तो आपको इनसे क्या ताल्लुक है? सर हम ये लोग मिसिंग हैं अभी? नहीं, अब पेश कर दिए गए। तो फिर आपकी पिटीशन खत्म हो गई? नहीं सर, टू दैट एक्सटेंट मैंने ये कहा है कि किन हालात में इनको उठाया गया, किन हालात में अपीयर कराया गया। एक सेकंड ठहरिए ना, स्टेट एजेंसी, या तो आप इत्तेजाज एहसन साहब के सामने उठाया गया हो तो वो कह सकते हैं हाँ मुझे पता है, या जो उठाया गया शख्स वो खुदा के कहे